हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म 1 के लिए डिटर्मिनेंट के असर्शन रीजंस को डिस्कस करेंगे। असर्शन रीजन जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन टू स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी बेटा। स्टेटमेंट 1 फॉर असर्शन, स्टेटमेंट 2 फॉर रीजन। क्लियर है बेटा? इफ कंडीशन है बेटा, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, अगर बेटा दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होगी एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, देन ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर होगा। अगर बेटा इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू होंगी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 मतलब जो रीजन है बेटा आपका उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट टर्म बेटा, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट 1 बेटा ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, देन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगी। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, देन डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नाउ बेटा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, असर्शन स्टेटमेंट 1, रीजन स्टेटमेंट 2। इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, सेम ही स्टेटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देखो बेटा, स्टेटमेंट 1 हमेशा स्टेटमेंट्स को ऑलरेडी पढ़ो देन सॉल्व करना स्टार्ट करो बेटा। स्टेटमेंट 1 गिवन है a0 0 b 0 b0 0 0 c स्टेटमेंट, देन a इनवर्स गिवन है बेटा, एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन है द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट द इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, हर बार डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा आपके पास, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी हर बार डायगोनली आएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू है। एंड नाउ स्टेटमेंट 1 चेक करो बेटा, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, मींस कोई भी नंबर आएगा बेटा इट्स इनवर्स, डायरेक्टली देखो कोई भी नंबर आएगा, इनवर्स ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स इनवर्स इज ऑलवेज डायगोनल, therefore this is diagonal। and for numbers अगर a इनवर्स फाइंड आउट करना है, then final answer is 1 by a 1 by b and 1 by c ही आएगा, means this option is also correct। for example अगर मैं कोई भी नंबर लगाता हूं, if we write a is equal to 2 3 7 0 0 0 0 नंबर है बेटा, for a inverse डायरेक्ट आ जाएगा बेटा, this is 1 by 2 0 0 0 1 by 3 0 0 0 1 by 7। direct method to solve inverse of diagonal matrix। clear है बेटा? this is a direct method to solve inverse of diagonal matrix। complete method है बेटा, a inverse is equal to adjoint of a divided by determinant of a। means जो adjoint भी आएगा, adjoint भी adjoint of diagonal matrix is also diagonal, inverse of diagonal matrix is also diagonal matrix। now statement 1 and statement 2 both the statements are true। if both the statements are true, then in second term is the correct explanation of first term, then option a is your correct answer, means option a is your correct answer। clear है बेटा? correct option answers हैं। next बेटा second question है, first statement same है बेटा, the inverse of this matrix does not exist, the matrix this is not non singular। same matrix है बेटा, inverse for inverse correct method to find the inverse is a inverse is equal to adjoint of a divided by determinant of a। and first of all find out करो बेटा determinant of this matrix। determinant of this matrix find out करोगे बेटा, first term 1 बाहर आ जाएगी बेटा, this number is 6 10 8 7 माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर 3 देखो बेटा 3 लिखोगे, this term is 2 10 9 7, last term is plus 5 and the remaining term is 2 6 9 8 2 6 9 8। this number is, this term is equal to 42 minus 80, this minus this term minus this term, internal term minus आएगी 14 minus 90 5 16 minus 54। बेटा डिटर्मिनेंट चेक करो, this number is equal to minus 38 3 into 90 minus 14 minus 76 plus 5 into minus 38 5 into minus 38
this term is equal to, now check करो बेटा, minus 38, 76, 18, 21, 22, 228 and minus 190. And this term is equal to 0. Therefore, determinant answer is equal to 0 है बेटा. Determinant of this term is equal to 0. अगर बेटा determinant 0 हो जाएगा in inverse formula, अगर determinant 0 हो जाएगा then inverse not exist. अगर denominator term 0 हो जाएगी, therefore inverse does not exist. मतलब first statement बेटा true है. First statement is true. But second statement, the matrix this is non-singular. Matrix is singular when its determinant is 0. Matrix is singular when its determinant is 0. But in this case, determinant matrix is 0. If determinant 0 आएगा, then it is singular matrix. But given है, this is non-singular matrix. Therefore, this expression is false. Means expression first is true है, second false है. Therefore, our answer is A true. देखो ना, C option. Statement 1 is true and statement 2 is false. Therefore, C option is your final answer. Therefore, C option is your final answer है बेटा. Clear है term? Next term बेटा. Adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. देखो first statement है adjoint of a diagonal matrix is diagonal matrix and second term given है term. देखो बेटा first statement true है. क्यों true है? Adjoint of a diagonal matrix is diagonal. In first question हमने discuss किया था बेटा. First question में हमने discuss किया था diagonal inverse of a diagonal matrix is diagonal. Therefore, adjoint of a diagonal matrix is also diagonal. Means first statement is true. Second term, actually property of adjoint. This is the property of adjoint. Adjoint of A into A or A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity term into IN into identity term. And value of determinant of A is equal to 0. Value of determinant of A is equal to 0. 0 into any identity matrix is 0. Therefore, second statement is also true. But second is not a correct explanation of first. This is not explanation of first. Therefore, both the statements are true but not explanation. Both the statements are true. Therefore, option B is your final answer. Option B is your final answer. Clear है बेटा? Option B final answer. Both the statements are true but not a correct explanation. Next term बेटा, given है बेटा, the value of this determinant is 65. First term given है. B given है. B is a symmetric matrix. Then B inverse is also symmetric matrix. बेटा, this second condition is correct. It is a correct explanation. If matrix is symmetric, then its inverse is also symmetric. But for first expression, for first term, determinant find out करो. For first expression, the determinant of first expression is 7018 minus of minus 3 this term is equal to 3048 plus 5 3741 clear students? This term is equal to 2 56 plus 3 24 plus 5 into 3 minus 28 minus 25. Clear students? Value of this term 156 into 2. 156 into 2 is equal to 112. 24 into 3 72 minus 125. This term is equal to 112 plus 72. 112 plus 72 480 184 minus 125 14 minus 5 9 5. This term is your 59. मतलब determinant of first term is 59. First term is false but second condition is true. Therefore option D. The first term is false and the second is true. Therefore option D is your final answer. Option D is your final answer for this explanation. Clear है बेटा? Next term. Similar term है बेटा. Statements given है बेटा. Statement 1 and statement 2. A are given है बेटा. Determinant of A1, A2, A3 2016 find out करना है बेटा. First term. Well, value put करो बेटा. If we substitute value of R is equal to 1, our first determinant is
1 0 0 1. Second determinant is equal to, if we substitute R2, 2 1 1 2. Next term, if we substitute 3 3 2 2 3, up to so on. If we substitute up to so on, total terms value of R last beta substitute करोगे 2016, 2005, 2005, 2016. Simplify करोगे बेटा first term. This is the determinant of A1. This is the determinant of A2. This term is the determinant of A3 up to so on determinant of A 2006. Value of this term is 1. This term is 4 minus 1, 3. Next term 9 minus 4, 5 up to so on directly बेटा up to 2000 terms लिखो. मैं simplify नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसे simplify नहीं कर रहा हूँ, directly only term लिखोगे up to number of terms. Now sum of these expressions, sum of these terms. This term is AP and sum of APs. Sum of AP. First term is A. Common difference is 2. Common difference is 2. First term is A. Common difference is 2. And the sum formula for sum is n by 2. Formula is n by 2. 2A plus n minus 1 into D. बेटा formula apply करोगे, n is 2006 upon 2. 2A 2 plus 2006 minus 1 into D2. बेटा simplify करो, term simplify करोगे. This number is equal to 2006 upon 2. 2 into 2 plus 2 into 2006. 2 into 2006 minus 2. बेटा कैंसिल हो जाएगा 2 2 एंड बाहर 2 भी कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग पार्ट इज 2006 होल स्क्वायर. दिस टर्म इज होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन इज आवर ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. First statement is true, and if A is a matrix, for second statement, if A is a matrix of order 3, determinant of A2 है, then adjoint of this term. Student, adjoint of determinant is equal to determinant raised to power n minus 1. Determinant raised to power n minus 1. Now determinant of A, n is 2, value of n is 3, order is 3. If we substitute 3, 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, and determinant of A is 2, therefore answer is 2 square. Our second statement is also true. First statement is true, second statement is also true, but not a correct explanation of first term. Second statement is not a correct explanation of first term, therefore option B is your final answer. Option B बेटा आपकी final answer है. Clear है? Next term बेटा. Statement given है बेटा. चेक करोगे बेटा. The determinant of a matrix this is 0. बेटा given है, determinant of a matrix given है is 0 given है बेटा. Then the determinant of a skew symmetric matrix of even order is 0. Second statement is false. Actually determinant of a skew symmetric matrix of even order is a perfect square. Even order is a perfect square, but for odd order, अगर बेटा odd order आ जाएगा, then this term is 0. Therefore second statement is false. Determinant of a skew symmetric matrix for odd order is 0. Odd order means बेटा अगर for example अगर बेटा term आ जाए even order, this is a skew symmetric matrix 0 2 minus 2 0. Determinant of this part is 0 and 4. This is a perfect square. For even order it is a perfect square. For odd order, the determinant is, for odd order determinant is always 0. Clear है? Therefore second expression is wrong because even order is a perfect square, odd order is a 0. Therefore this term is 0. Second condition is false. Second condition is false. Sorry, note 0 term. Second condition is false term. Now first determinant check करो बेटा. The determinant of a matrix this is 0. Check करो बेटा. Determinant of this matrix, actually if we write this matrix as a P minus Q, P minus R, minus common करो बेटा. This term is P minus Q. 0 minus common करो R, this term is Q minus R.
डिनोमिनेटर माइनस कॉमन, लास्ट टर्म माइनस कॉमन करो, दिस इज p माइनस r, माइनस कॉमन करो q माइनस r एंड दिस टर्म इज 0. एक्चुअली चेक करो बेटा, दिस डिटर्मिनेंट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट 0 है, ट्रांसपोज करोगे, अगर बेटा ट्रांसपोज करोगे, इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a आ जाएगा. देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. Clear है बेटा? Determinant of a skew, this is a skew symmetric matrix and we know that determinant of a skew symmetric matrix is always 0. Determinant of a skew symmetric matrix is always 0. Therefore, first expression is, first statement is true, but second statement is false. Therefore, option C is your final answer. Option C is your final answer. First statement is true and second is false. Therefore, option C is your final answer. Clear है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट्स गिवन है बेटा, हर बार स्टेटमेंट्स पढ़ना, अगर कभी चेंज होके भी आ सकती हैं ये स्टेटमेंट्स, ऊपर नीचे शिफ्ट होके आ सकते हैं. इफ a इज इक्वल टू दिस टर्म, गिवन है बेटा, गिवन है a इज इक्वल टू दिस टर्म, a इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेटमेंट है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a एंड सेकंड स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1. एक्चुअली फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट ऑफ a इज a इनवर्स इज इक्वल टू, a इनवर्स फॉर्मूला इज adjoint of a divided by determinant of a. if determinant of a 1 हो जाएगा, then ऊपर वाली स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू हो जाएगी. अगर बेटा determinant of a 1 हो जाएगा, then फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, सेकंड भी ट्रू हो जाएगी. so determinant of a फाइंड आउट करो. determinant of this expression is sin अल्फा, बाहर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नहीं देखोगे. this expression is sin अल्फा 0 0 1. नेक्स्ट टर्म बेटा, माइनस of minus cos alpha, minus of minus cos alpha. Next term beta, internal terms are cos alpha 0 0 1. Last term beta 1. This term is equal to cos alpha sin alpha 0 0. From first term, this term is written as sin alpha into 1 sin alpha minus 0. This is equal to sin alpha. माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 0. इंटरनल टर्म इज कॉस अल्फा हो जाएगी बेटा, 0 माइनस 0, दिस टर्म इज 0. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बेटा 1 हो जाएगा. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. देयरफॉर आवर डिटर्मिनेंट इज 1. बेटा हमारा डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा. अगर हमारा डिटर्मिनेंट 1 हो गया, देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो जाएगी, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट 1 है, देन स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो जाएगी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. देयरफॉर एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 भी है. क्लियर है बेटा? देयरफॉर ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर है. ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट ऑप्शन है बेटा. देखो बेटा नेक्स्ट, if A be a 2 cross 2 matrix, बेटा मैट्रिक्स गिवन है whose order is 2 cross 2 and adjoint of A is equal to A and determinant term given है. बेटा order of matrix is 2 given है. Actually properties of adjoint of A is, property of adjoint of A is equal to A into determinant of A raised to power n minus 2, and property of second statement is for any order is determinant of A raised to power n minus 1. Now, order is 2. In question, beta, order given है 2 cross 2. That means value of n is 2. Value of n beta 2 पता है. Substitute करो. Value of n is 2. Therefore, this is 2 minus 2 is 0. Any term raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. Therefore, our answer is A. Therefore, adjoint of A is equal to A आ जाएगा. Means first option is your correct answer. Similarly, for second term, if we put n is equal to 2, order 2 given है, 2 minus 1, this is equal to determinant of A. Therefore, our second statement is also true. Second statement भी बेटा complete true है for order 2 cross 2. Both the statements are true, but not a correct explanation. First term भी true है, second term भी true है, but it is not a correct explanation. Therefore, option B is your final answer. Both the statements are true, but not a correct explanation. Therefore, it is a final answer. Next question, beta. Area of the triangle
बेटा given है the area of the triangle this term is equal to 16 by 2. If x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 are the vertices of a triangle, then area of triangle is this term. बेटा area given है, this is our area, this term is area of triangle is given. This is the correct formula, this is the formula. If three vertices are given, then for area formula बिल्कुल ठीक given है बेटा, means second option is true. Now the area of the triangle this and this term is equal to 16 by 2 given है बेटा. Area given है 16 by 2. Area find out करो by using formula 1 by 2. बेटा points plot करो, x1 y1 3 8 minus 4 2 5 1 1 1 1. Area find out करो बेटा, determinant solve करो. Area 1 by 2 3 2 1 1 1 minus 8 minus 4 5 1 1 plus 1 last term is minus 4 5 2 1. क्लियर है बेटा? डिटर्मिनेंट सॉल्व करो बेटा, कंप्लीट एंड फाइनल डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. दिस टर्म इज इक्वल टू 1 by 2 3 2 minus 1 this is 1 minus 8 minus 4 minus 5 plus 1 minus 4 minus 10. This term is equal to 1 by 2 3 minus 8 minus 9 minus 40. 1 by 2 बेटा, 3 plus 72 minus 14, 75 minus 14, 61 by 2. This is your final answer. This is square units. Area is 16 by 2 बेटा, clear है. Second term भी ठीक है. And second statement is the correct explanation. बेटा second statement जो है आपकी correct explanation of first statement है. Means formula use होगा by using second statement. Therefore our A option, A statement is correct statement. Means both the statements are true and second is the correct explanation of first. Clear है बेटा? Next one बेटा. If the points this and this are collinear, अगर आपके points collinear हैं, then the value of K find out करना है. Condition for collinear बेटा, area is equal to 0. Condition for collinear है बेटा, 3 points are collinear if area of triangle is equal to 0. Means triangle नहीं बनेगा, value of area is equal to 0 हो जाएगी. Second point given है, 3 points are collinear if area of triangle is not equal to 0. बेटा second statement false है, क्योंकि points collinear ही उसी केस में होंगे अगर points collinear ही उसी केस में होंगे अगर area of triangle 0 है. That means second statement is your false statement. Now check करो first statement true है या नहीं true है बेटा. By using area equal to 0, area is equal to 0 करो. That means area formula है बेटा, area is equal to 0 करोगे, K 8 minus 4 2 5 minus 1 1 1 1 is equal to 0 बेटा. This term is equal to 0. Solve करो बेटा, 1 by 2 shift हो जाएगा. Determinant solve करो. This is 2 1 minus 1 1 minus 8 minus 4 8 minus 8 8 8 minus 4 1 5 1. Last step बेटा, 1 minus 4 2 5 minus is equal to 0. Clear है बेटा? Now this expression is K 2 plus 1 minus 8 minus 4 minus 5 plus 1 4 minus 10 is equal to 0 हो जाएगा बेटा. This term is equal to 3K minus 9 into 8 72 plus 72 minus 6 plus 72 minus 6 is equal to 0. 3K is equal to minus 66. Value of K is equal to minus 22. बेटा first option ठीक correct है, but second false है. First option is correct, but second is false. Then first option is correct. C is true, but statement 2 is false. Statement 1 is true and statement 2 is false. Therefore, C option is your final answer बेटा. C option आपका final answer हो जाएगा. C option is your final answer. Clear है बेटा? काफी easy question है, session and reasoning questions.
आई थिंक आपके लिए काफी यूजफुल होंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के लिए आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।